बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नंबर बेसिस। सो आज का हमारा टॉपिक है वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन टू नंबर बेसिस एंड समथिंग विच इफ यू आर अ स्टूडेंट और आप डिफिकल्टी फील कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो दिस होपफुली दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट वन। सो हम थोड़ा सा बेसिक अगर शुरू करें, हम 10 तक गिनती सीखते हैं स्कूलों के अंदर और एग्जांपल दी जाती है कि वाई काउंट टू अप टू 10। बेसिकली जो ह्यूमंस हैं और उनके हाथ में 10 उंगलियां हैं, सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। सो दैट्स हाउ एनाटॉमिकल रीज़न के हम 10 तक गिनते हैं। और इस 10 तक गिनने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल हम नंबर शुरू करेंगे 0 to 9। चाइनीज स्टाइल डिफरेंट है थोड़ा सा, 1 to 10 तक जाता है, बट लेट्स इग्नोर इट। हम नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक जाएंगे। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट नंबर 10, लेकिन हमारे पास कोई सिंबल 10 के लिए है नहीं। पैनिक टाइम्स, व्हाट टू डू? ऑफ कोर्स हमने सीखा हुआ है, वी नो द आंसर, कि हम एक नेक्स्ट कॉलम ऐड करेंगे और उसके अंदर 1 को सेट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को 0 में। लेट्स सी अगेन हाउ इट विल लुक लाइक। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड इट, सो हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम 0 to 9 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट कॉलम हमें ये बता रहा है कितने वंस हैं। दैट बेसिकली वी डू, हम इस पे इतने यूज्ड टू हैं कि हम गौर नहीं करते, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम, उसके बाद हमें ये बताता है हाउ मेनी टेंस आर देयर। दिस इज कॉल्ड बेस 10 एक्चुअली, जो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एंड अगेन कंटिन्यू 49 हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। एंड 56, लेट्स से 256। अब हमारे पास सेकंड कॉलम में स्पेस नहीं है, 256 टू कॉलम्स यूज करते हुए हम नहीं प्रेजेंट कर सकते। सो वी विल ऐड अनदर कॉलम एंड दैट कॉलम विल बी हाउ मेनी हंड्रेड्स आर इन द नंबर। सो 256 एंड सो ऑन फॉर 1000 नेक्स्ट कॉलम। सो दैट्स बेसिकली बेस 10 वर्क्स, जो हम बचपन से सीखते आए हैं और जिसे हम जानते हैं। आप लिटरली पिक्चर कर सकते हैं नंबर को ब्रोक इन कॉलम्स, और ईच कॉलम अलाउ करता है कंटेन 1 डिजिट बिटवीन 0 and 9, और हर कॉलम जो है वो बीइंग वर्थ 10 टाइम टू द नेक्स्ट कॉलम। ग्रेट थिंग अबाउट डूइंग दैट के दिस गिव्स यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच नंबर एंड दिस काउंटिंग इज इन बेस 10. The key important thing here to remember, there is nothing special about base 10, not at all. इसकी जस्ट हिस्टोरिक एनाटॉमिकल रीजंस हैं कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ नो मैथमेटिकल रीज़न टू मेक अस काउंट इन 10। अगर हम चाहते और चाहें, हम सेवन्स में काउंट कर सकते हैं, दैट विल बी बेस 7। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that's it, that's the symbol available to that base 7. How it will work, let's see. So again, break down number in the column. First column is for ones. How many sevens in the number goes in second column? How many 49s? So base 10 में था 1, 10, 100, 1, 7, 49. So let's say a number here, 0 to 6. We have a number 0 to 6. We will write until 6 like that. Now for next number 7, we don't have capacity in first column. How we will write 7 in base 7? That's how we will set the first column exactly like जो हम 10 वाले base 10 में कर रहे थे. Next 8 to represent 8, 1, 1. That's how we will represent it in base 7. 9, 1, 2. How many ones? 2 ones, and 1 times 7, 9. And then number 108. अगर हमारे पास डेसिमल नंबर 108 है, give it a chance. How it will look like in base 7? It will look like this. अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि whenever you change base, your view for the number is very different. 108 number, how it is looking in base 10 and 213 in the base 7. Okay, let's simplify it further. अब हम करते हैं the number line, इसको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. So नंबर 9 एक नेचुरल वे है टू रिप्रेजेंट नंबर्स.
और इसके ऊपर ईच नंबर जो है एक पॉइंट है उन नंबर लाइन. सो देर आर दी, दैट्स हाउ यू कैन सी इट. सो हमारे पास हम देखें कि फ्रॉम अगर हम जीरो से लेफ्ट की तरफ जाएं तो -1 -2 एंड सो ऑन. और आप देखें अगर नंबर 10 को, एक नंबर लाइन पर ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है नंबर लाइन से. ऑफ कोर्स इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है ड्यू टू एडिशनल कॉलम, बट इट्स नॉट मच डिफरेंट. एंड आल्सो नंबर लाइन इट इज लाइक 108 नंबर लाइन पे सिमिलर स्टाइल में नजर आ रहे हैं. सो इसकी अगर बेस 7 में रिप्रेजेंटेशन देखें 213, तो रिप्रेजेंटेशन इज डेफिनेटली डिफरेंट in different bases, but number is itself same. The point I'm getting at to कि अगर आप नंबर लाइन को थिंक करें कि ये अंडरलाइन डेटा मॉडल है, तो बेसिस को इमेजिन करें ये व्यूज है. सो बेस 7 इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन और अनदर व्यू ऑफ द सेम मॉडल. अगर आपने वेब टेक्नोलॉजीज के साथ काम किया है तो मॉडल एंड व्यू मॉडल, दैट्स द सेम एनालॉजी हियर. So again 108 the view will be on base 10 like that, and base 7 is another view. The model behind it is same. Okay, so हमने देखा कि base 10 0 to 9 symbol, base 7 0 to 6 symbol. Another base very popular is binary, and computer counts in twos. They do not count in tens or sevens. So why they count in twos? Basically, the answer is to do with technology and economics. If counted in tens, हर digit के लिए हमें 10 possible values require होंगी. Human brain के लिए that works well, but doesn't work well in computer circuits. Of course, technically you can build a circuit with 10 states, but it will be it's not very simple. It will not be very simple circuit, and it will be not vastly cheaper. So using two values, that's the main reason actually. Technology and economics, you can build very simple circuit and very cheaply if you just have two states. So uh, that's it. That's actually the binary is. It counts in base 2. Let's see it further. Some terminology around it. Binary, we just say, and base 10 decimal. So we have these specific how they are called, and each digit is called bit in binary. So how the counting will work in binary. So we just saw 10 and 7. How it will look in binary. Exactly like same. So we will start with one column. It will tell us how many ones are there. Second column, how many twos are there. Can you imagine what will go in the third column? Okay, we will come to it. So to represent 0, we will put it in first column. To represent 1, we are putting in again in first column. Now we are run out of symbols. What to do to represent 2? So we have the second column here. We will put 1 there and make the first column 0. So 1 multiplied 2 plus 0 is 2. For 3, 1 multiplied by 2 plus 1 is equal to 3. So again, that's how counting in binary is working. And if you work a little bit with that, you actually will remember how the next column will look like. So here at this point, we have exhausted again the second column. And now we need another column to represent number 4 because it will not fit here. So here the progression will look like 3, 4, 5, 6, 7. And again, we run out of space here and we can add another column to continue. That's how the counting in binary works. And you can see it's if you just imagine number structured in columns and their bases, that and the power, you can work around all this one. And if you work for a while, अगर आप कुछ अर्से तक काम करें तो एक्चुअली आपको ये 0 to 7 तक की जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये मेमोराइज हो जाएगी. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव एंड फ्लोटिंग पॉइंट को भी करते हैं, बट दे आर अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड और कुछ डिफरेंसेस हैं उसके जिस पर हम बाद में आएंगे. सो लेट्स सी नंबर 5 how we can represent it in a 8-bit memory location.
So that's how these are actually the same column. Ones, twos, four. 4 plus 1, 5. And the rest of the columns are padded to 0. Now I would like to touch a little bit topic which is जो time to time relate होता है जब भी आप bytes और bits के साथ binary के साथ काम करते हैं, which is called Little Indian versus Big Indian. Background ये है कि basically memory locations जो है tend to contain 8 bits और हमें नंबर को रिप्रेजेंट के लिए more than these bits required होते हैं. So normally इसको यानी कि binary representation is spread across यानी कि multiple locations. Uh, so basically जो first memory location है वो rightmost और otherwise least significant bits contain करती है. ये जो scheme है 8 bit में हमने ये देखा था ये slice 32 bits के अंदर rest of the bits are padded 0. Number 5 represented है, so rightmost side भी significant bits हैं. This scheme is called Little Indian. अगर structure is laid out like that. इसको just as it is ले लें आप. राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और आपके जो नॉर्मल लैपटॉप्स हैं और टिपिकल कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर है. दे फॉलो दिस स्कीम. सम हार्डवेयर रिवर्स दिस स्कीम एंड दैट्स एक्चुअली बिग इंडियन. So that was the topic I wanted to mention because it comes up time to time. What is Little Indian and Big Indian? That has to do the architecture of the system. Okay, next we will touch a little bit more terminology. Bit, byte and word. So bit we already saw 0, 1. This is called bit. Binary की जो digits हैं. एक byte के अंदर 8 bits होते हैं और एक word के अंदर it's a set of unit but let's for sake of simplicity let's say 16 bit होते हैं. एक D word के अंदर double word 32 bits and Q word में 64 bits. Question: how many unique values we can store in a word? 16 bits is unique. So here is the form, the explanation. So 3 bit के लिए 8 values, so 4 bit के लिए 16, 5 bit के लिए 32, and pattern says that each new bit doubles number of unique values you can store. 64 bits, 18 million trillion values. So if you continue with this one, you will find out how many values you can store in a word, which is we already talked 16 bits. Okay. Next, we will talk about power notation. I will not go much deeper there. So let's start simple. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. You can simply write it as 2 to the power 3 or 2 to the power 4 for the next number. And for 2 to the power 2, we have a special name to square. Area, basic geometry, is length square. Cube, length cube. So value of the power is called exponent and number you are raising to that power is called base. So our question, using power notation in a word with n bits, 16 bit, we can store 2 to the power n unique values. So a byte contains 2 to the power 8, 255 values we can store, 0 to 255. A 16-bit word, 65,536 value. So power notation help us to determine how much is the capacity based on the bit values. Now next, let's see special numbers. Base 10, again go back to humans. रोजमर्रा की जो हम जिंदगी में करते हैं हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हम देखते हैं 10, 100, 1000, million, billion, or that's the number
हम जैसे ही ये नंबर देखते हैं, हम इन्हें राउंड नंबर के तौर पर सोचते हैं, हमारा माइंड सोचता है। और क्योंकि इनकी बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली दे आर जस्ट वंस विद फॉलोड बाय मैनी ज़ीरोस। इफ यू सी पैटर्न को देखें, और अगर हम ये देखें कि हम जो दूसरी चीज़ इनके साथ करते हैं कि हम इनके मल्टीपल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन। We know that it's not 7 billion, there is definitely some fraction to it, million 346 or 7 or 8 people. uh, हम इग्नोर करते हैं, नेचुरली हम मल्टीपल्स को कॉमनली यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो स्पेशल। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने स्पेशल लाइंस पे देखा था और बात की थी बेसिस और नंबर लाइन पर। तो ये जो नंबर की स्पेशल वो स्पेशलनेस तो नहीं है, ये तो बिट आर्टिफिशियल फील हो रही थी। सो अगेन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज नंबर्स कि ये इतने इजी टू रिप्रेजेंट हैं बेस 10 के अंदर। और आप देखें, दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विद 1 एंड 0। ओके, सो अगेन थिंक अबाउट इट, there is a reason to it, and it turns out what makes this number special, जो पावर ऑफ अ नंबर है वो क्वाइट डीपली रिलेटेड है उस नंबर को एज ए बेस यूज करने के लिए। इट हैज टू डू विद पावर इन सिंपल वर्ड। सो अगेन, 100 को अगर हम पावर स्ट्रक्चर में देखें, इट्स एक्चुअली 10 टू द पावर 2 और 10 स्क्वायर्ड। 1000 10 टू द पावर 3, 1 million 10 to the power 6, and so on. One with multiple zeros and they are powered. So using that power is very much related. So again देखें, 100 बेस 10 में डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। हमने अर्लियर कहा था एक नंबर बेस 7 में इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है। सो अगर हम उसको देखें बेस 7 के अंदर, it doesn't look like it's a special number there. It's base 7, it's 202. Nothing special here. In binary, also not easy to present same number 100. So also, just because a number is special in one base doesn't make it special in another base. Okay, so these numbers, ये नंबर बेस 10 के अंदर स्पेशल हैं। What is special in binary? Natural question आएगा ना। They will be 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, and so on. Let's see how those looks. So अगर हम 2 को देखें, बेस के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें 1 0, 2 to the power 2, 1 0 0, 1 0 0, 3 zeros, and so on. Just a 1 followed by many zeros. In fact, it is generally true if you take any base n and any integer p, then the number n to the power p will be represented in base n as 1 followed by p zeros. So you will have 1, आपके पास एक होगा और जितने p's होंगे उतने zeros उस base में होंगे. And this gives us a very simple way of writing power of 2 in binary. So let's try it out. 2 to the power 4, 1 with 4 zeros. 5, 1 with 5 zeros. 2 to the power 6, 6 zeros, and so on. These are the numbers. ये वो number हैं. They are very special to computer in the same way 10, 100, thousands are special to human beings. These numbers are well known in programming language such as assembly. So if you have some related field, you might be very well aware of these numbers. Power is a common factor again here. So that's another thing, binary, special numbers in binary. So these special numbers we have been talking about, base 10 and in binary, uh,
ये बहुत ईजी है राइट करने के लिए, जस्ट वन विद मैनी जीरोस, बट दे आर आल्सो हेल्प अस टू डिटरमाइन द डेटा कैपेसिटी, जो हम अभी बात कर रहे थे उसकी. सो फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव लेट्स से लेट्स गो टू बेस 10 एंड थिंक अबाउट दैट. हमारे पास दो बॉक्सेस है और नंबर 53 को हमने उसके अंदर फिक्स करना है. सो वी विल पुट इट लाइक दैट. लेट्स थिंक हमारे पास अब नंबर 212 है एंड इट नॉट फिट इन दैट टू बॉक्सेस, क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो हम इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, बट इट विल बी, that will be 99. So notice 99 is 10 to the power 2 minus 1, right? That is capacity, 10 to the power 2 minus 1. Okay, what about if we have 3 digits available? The biggest capacity or biggest number we could write would be 999, which is exactly 10 to the power 3 minus 1, 1000 different values. So in general, n digits is equal to 10 to the power n unique values, और उसकी range 0 to this number होगी. That was the case of 10, and same thing holds in binary. Let's see how it looks there. So if we have p binary bits, numbers 0 to 2 p minus 1. So अगर हमारे पास 3 bits हों binary के, 3 bits, what will be the biggest number we can put there? Think about it. 3 bits हैं. So 2 to the power 3, 8 minus 1, 7. And that's how it will look like in binary. और अगर हम next number 8 लिखना चाहें, we can't fit it here. Capacity exceeded. That's the maximum number. 8 नहीं इसमें fit होगा. हमें उसके लिए एक additional bit चाहिए होगा. Like that. So that's basically yes आज के लिए. एक्चुअली मैं टेस्ट कर रहा था इसकी यूट्यूब की स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी को. इट्स बीन अ व्हाइल आई ट्राइड दैट, and yeah, so I picked this topic, and let me know if this is something you are interested in, and we can continue exploring some interesting facts about these numbers. Thank you very much. Shukriya. Thank you. Have a nice day. Bye.